ये मैदान, एक एक पसीने के बूंद बूंद से सींचा है ये मैदान। सारी तेरी पैरों की ताकत, सारी उन दिनों की मेहनत, देखने को बेचैन है ये दुनिया। सारी तेरी पैरों की ताकत, सारी उन दिनों की मेहनत, देखने को बेचैन है ये दुनिया। अजोनी का मकसद नहीं है जीतने का इरादा, आए हैं तो जीतेंगे हम, वाह किस्मत का करम, हर एक लम्हे में कर ले रहा है किसी को दंग। आए हैं तो जीतेंगे हम, वाह किस्मत का करम, हर एक लम्हे में कर ले रहा है किसी को दंग। हमारे कदम देंगे इस मैदान को इंसाफ, हार को भी होगा हमारा खौफ। सबके जुबां पे बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा, हमारा। आए हैं तो जीतेंगे हम, ना हो किस्मत का करम, हर एक लम्हे में दम कर दे रहा है किसी को दंग। आए हैं तो जीतेंगे हम, ना हो किस्मत का करम, हर एक लम्हे में दम कर दे रहा है किसी को दंग। आए हैं तो जीतेंगे हम,
ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया हराने का मकसद नहीं है जीतने का इरादा आए हैं तो जीतेंगे राह किस्मत का नरम हर एक लम्हे नरम कर ले यहाँ है किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम राह किस्मत का नरम हर एक लम्हे नरम कर ले यहाँ है किसी को दंग हमारे कदम देंगे इस मैदान को इंसाफ हार को भी होगा हमारा खौफ सबके जुबां पे बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा हमारा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ है किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ है किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का
ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया हराने का मकसद नहीं है जीतने का इरादा आए हैं तो जीतेंगे ना हो किस्मत का गम हर एक लम्हे कर ले यहाँ है किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का गम हर एक लम्हे कर ले यहाँ है किसी को दंग किस्मत का नरम हर एक लम्हे कर ले यहाँ है किसी को दंग है तो जीतेंगे हम नाम किस्मत का नरम हर एक लम्हे कर ले यहाँ है किसी को दंग जीतने का खुमार वहाँ तक पहुँचेगी ये पुकार हमारे कदम देंगे इस मैदान को इंसाफ हार को भी होगा हमारा खौफ सबके जुबां पे बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा हमारा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ है किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ है किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम
किस्मत का करम, हर एक लम्हे मरम कर ले रहा है किसी को दंग है तो जीतेंगे हम। राह किस्मत का करम, हर एक लम्हे मरम कर ले रहा है किसी को दंग। जीतने का खुमार, वहाँ तक पहुँचेगी ये पुकार। हमारे कदम देंगे इस मैदान को इंसाफ, हार कभी होगा हमारा खास। सबके जुबां पे बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा, हमारा। आए हैं तो जीतेंगे हम, ना हो किस्मत का करम, हर एक लम्हे में दम कर दे रहा है किसी को दंग। आए हैं तो जीतेंगे।
It is sports meet is going on. IIT Rodhpur versus IIT JODHPUR. It is battle in between. It's got 3 boundaries in this over. What a great over. Ankit, a bit of expensive in this over. Rahul was striking the ball so well. 18 for 2 is the score of Rodhpur. We have watched a good game yesterday. IIT Goa versus IIT Kanpur. Kanpur won the toss, elected to bat first, and then they are able to get that decent total on the board. And after that, a dominance from the bowling unit as well. So it's a good performance that we have seen from IIT Kanpur yesterday. So the excitement is high as the cricket games are going on. You can watch all the sports. There are various sports that are going on here. Up in the air this time, it's in the no man's land. It's 50th Inter IIT Sports Meet. You can watch football, you can watch other sports as well. Just need to subscribe the channel on YouTube and you are good to go. You can catch all the live action just by sitting at your home. Beautiful drive again from Nishant, but finds a fielder. "19 for 2 is the score here. Rodhpur versus Jodhpur. Battle is going on. We just started the game and the expectation is quite high. We have got plenty of talented players here. Within this time, couldn't pick up the length, and that's why couldn't find the connection with the bat. There was an inside edge, I think. Yes, it was an inside edge. The keeper is not able to take that catch. One bounced into the hands of the keeper. Swing and a miss one more time. Able to beat that batter. Nishan, who just came in, who will try to settle in down there. And the bowler will try to pick up that wicket because he also knew that the batter just came in, so he will need that time. And again, an inside edge. Excellent bowling from Vikas Chowdhury. He's got 2 wickets on his name. He's bowling his second over. Only 1 run on his name in this over. Let's have a look at that again. Inside edge came from the bat. He was standing away ahead of the crease just to cut that swing. And that's a good strategy, but that connection is not able to pick that connection. इस बार छोड़ दिया, जाने दिया. बढ़िया ओवर ये. 1 रन आई इस ओवर में और 2-3 बार पीट भी किया बैटर को. अंतिम समय पे थोड़ा सा कंफ्यूज दिखे और छोड़ दिया बॉल को. वही अच्छी बात. 3 के बाद 19 पे 2. Beautiful shot, up and over. Getting a boundary on the very first ball. He's got plenty of room there to hit that shot through the covers. Excellent connection he's having with the ball and is in his zone now. Classic timing and full drive.
Beautiful piece of batting from Rahul Bhuria. Have lost a couple of wickets, but he's maintaining that run rate. He's trying to stick in. He's just trying to go for the big shots, and he's able to get that. That's again up in the air, and the ball is lost. It's out of the park. He's now hitting machine for IIT ROPAR. Got plenty of time there. That's a quicker one. Identified that early, went towards the pitch of the ball, and bang. It's beautiful shot. Classical connection with the bat. The pressure is now on the bowler, Hari Jangir. Again, that's a classic connection. Again, a 6. 4-6-6. He's just punishing the bowler. Got plenty of time to play that shot. It was out some area. He was quite aware of that. Out of the again. Dominance in this over. It's discussion time straight away because boundary the first ball and then 2 massive sixes. Something need to be changed in that strategy. The kind of hitting he's having, it's excellent connection he's having with the ball. He's playing a 31 from 11. Massive hitting by Rahul Bhuria. Projected score is of 200, but let's not think about that at this moment. A long way to go. Hariom Shankar has been expensive. We'll try to come back in this over itself, but it's not that easy task because you must be feeling that pressure. इस बार कनेक्शन हो नहीं पाया अच्छे से, उस वजह से कहीं ना कहीं उस सिंगल बटोने में कामयाब, सिंगल चुरा लिया वहां पे। फील्डर मौजूद था, थोड़ा सा उससे दूर था, तो वहां पे उसका ही फायदा उठाया। इनसाइड एज लगा, बॉल चली गई थी बाहर। अब निशांत पटेल, अभी तक खाता खुला है नहीं, 7 बॉल खेल चुके। पावर प्ले का ये चौथा ओवर। लाइट दी थी इस बार, उछाल इनवाइट किया था जरूर, लेकिन ग्राउंडेड शॉट खेलने का प्रयास, वो सोच बिल्कुल सही है निशांत की। इस बार फिर से वो कनेक्शन हो नहीं पाया, सीधा फील्डर के पास जाएगा, कोई रन मिलेगा नहीं। खाता खुला है नहीं, तो वहां पे थोड़ा सा दबाव होता है बैटर के ऊपर। हालांकि दूसरे छोर से अच्छी हिट मार रहे, रन्स के ऊपर काम कर रहे, स्कोर बोर्ड को चलता रखा हुआ है अब तक राहुल भूरिया ने, लेकिन दूसरे छोर से थोड़ा सा दबाव होगा। 4 के बाद 36 पे 2। पहले गेंद पे वो सिंगल निकाली है, अच्छी शुरुआत इस ओवर की।
जिस तरह से वो हिट कर रहे थे पिछले ओवर में, खासकर राहुल भूरिया, तो वो अब नॉन स्ट्राइक पोजीशन पे। शायद इस पे 2 स्कोर है। यहाँ से वो पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश रहेगी। इस बार अच्छा खेला है, लेकिन सीधा फील्डर के पास है, पहुंच जाएंगे। वही कह रहे कीपर की थोड़ा सा दूसरे छोर पे वो थ्रो मारना था। अगर वो नॉन स्ट्राइक पोजीशन पे होता तो करीबी हो सकता था मामला, क्योंकि मन बना लिया था राहुल ने, तो वो रेडी थे, ऑलरेडी स्टेप आउट कर चुके थे, तो वो आसानी से पहुंच जाते, लेकिन दूसरे छोर पे वो मौका था, थोड़ा सा थ्रो चूका, लेकिन उस वजह से कोई खतरा नहीं। IIT ROPAR, they are playing good cricket here. On the other side, Jodhpur also have got a couple of wickets, but now what is going to be the strategy? Because he's striking the ball so well, smashed. Again, a maximum on his name. Look at that, nothing wrong in that ball, just is batting flawlessly at the moment. Hitting the ball when he's getting the ball in his arc, he's making sure that it's going to go to 6, it's going to go to maximum. That's why the bowlers are feeling that pressure. Vikas Chaudhary is having that 2 wickets on his name, but the way Rahul is batting is putting the pressure on the bowler, the wicket-taking bowler of Jodhpur. It's a beautiful run rate they are batting at, making sure that each and every over they will have that maximum or a boundary, and then they are dealing with the singles and doubles too. That's why it's getting hard for the bowlers to bowl him out. कमाल का कनेक्शन है इस बार भी, कमाल का ये चौका, कमाल का ये खिलाड़ी राहुल भूरिया। वो गैप जरूर थी वहां पे, थोड़ी सी हल्की सी गैप, और फिर रोक नहीं पाएंगे इस रफ्तार के बाउंड्री। बढ़िया खेल रहे अब तक देखा जाए तो। जैसे ही वो बाजों को खोलने का मौका मिल रहा है तो उसका फायदा उठा रहे, आसानी से वो चौके छक्के मार रहे, उस वजह से रन गति काफी तेज है। रन रेट के ऊपर नजर डालोगे तो 10 के ऊपर का है, और श्रेय जाता है राहुल को। इस बार भी फाइन गया है, काफी फाइन गया है, और एक और चौका देके जाएगा। 47 पे पहुंच चुके हैं देखते देखते। नजर आखिरी समय तक बना के रखे, थोड़ा सा यहाँ पे लकी साबित जरूर, लेकिन खतरे से दूर था वो शॉट। फाइन लेग के ऊपर कोई फील्डर मौजूद है नहीं। 48 पे 2 ये स्कोर है IIT रोपार का। इनफैक्ट उस चौके के साथ अब 52 लग चुका है, 50 के ऊपर का वो स्कोर 5वें ओवर खत्म होने से पहले। ये दर्शाता है डोमिनेंस, दर्जे की बैटिंग हो रही है, जिस दर्जे की बैटिंग हो रही है उस वजह से। 50 का आंकड़ा छू लिया, एक बार फिर से हवा में खेलने की कोशिश, फील्डर से थोड़ा सा दूर, और इसी के साथ यहाँ पे अर्धशतक पूरा। 17 गेंदों में वो 51 रन। कमाल का ये खिलाड़ी, लाजवाब हिटिंग शुरुआत से देखने के लिए मिली है राहुल भूरिया से। इस बार बच्चे जरूर, लेकिन एंजॉय करेंगे। रन आ रहे बोर्ड पे, अर्धशतक भी पूरा कर चुके हैं। कमाल का स्टार्ट दे चुके हैं अपने टीम को। 5 के बाद 56 पे 2।
That's a joy for the ROPAR fans. Kind of hitting he's having, he's just exploding the scoreboard by having that massive on his name. 50 already came up, and the last over of power play. Who's gonna ball and how? That is the biggest question because Vikas, he has got 2 wickets on his name. He was punished in the previous over, so it's getting hard for the bowlers to come back in the game. Only the wicket can give that chance to change the rhythm of the game. And that's the pressure. Plenty of time. That pressure is gonna be the game changer. If you are under pressure, no matter how good you bowl, you are not going to bowl at right areas. And it happens especially when that hits come. See the gap, couldn't time the ball pretty well. Will not get a boundary on that occasion, but surely get that second also. Chandrapal Singh, he's bowling his first over here, and that's a crucial over of power play. There is always a chance to get the batter out, especially the new batter, Rahul. He's still out there, so he will try to hit the ball out of the park. He just wanted to make the maximum use of the power play. And he used that well. Down the ground, played it to with a classic connection, sweet spot of the bat, and the ball is racing towards the boundary. This is the first boundary for Nishant Patel. Beautiful pick. Identified the length and just went towards the line of the ball. And simple push on the ball to get a boundary. So that's a deadly combination if Nishant is believing in the timing, and on the other side, the bottom hand is coming into the picture again and again from Rahul. So it's a deadly combination. This is this one. You have to try this again and again. It's not that hard to put that Yorkers in place, but you need to stick it to that area again and again because there is a very less margin of error. Because if you not able to get that right area, if you're not able to hit that Yorker, then the batters will make sure that they will send the ball out of the park because that you convert it to low full toss or full toss, and that's the gift of the batter. So 2 more balls are there in this over. Super over so far. Only a boundary considered, and then 3 more runs, including that wide as well. So he's bowling the last over of power play. Remember, talking about that wicket, about the wicket, and wicket came. Excellent over from Chandrapal Singh so far. 7 runs considered. He has got a boundary as well, but he's sticking to that line and length again and again. So that's why he's able to get that result for the team. Searching for the wicket. They were hunting for the wicket, and that hunt is over. That pressure is pressure is released in the bowlers. Released in the bowlers. Chandrapal Singh. You started thinking that yes, I'm facing that dot balls. I'm creating that pressure. So it's all about mind sometimes. And you are able to strengthen your mind in the game of cricket or any sports, you win. Power play comes to an end. 63 is there on the board, so it's a win-win scenario for both the teams. IIT ROPAR, they're able to get that enough runs on the board. On the other side, IIT JODHPUR, they're able to get that important wickets as well. That was a game-changing over, I believe. That was a mood turning over. That was important.
They were searching for the wickets and they have got it. And if Rahul Bhuria, if they are able to get this wicket, then cherry them. Because he's hitting the ball so well, 17. So they will. Ankit Shah, the new bowler. In fact, new over for him because he has bowled a first over and 14 runs conceded in that. So we'll try to get his rhythm back in this over. If you're not confident, if you're not having that conviction with the shot, it's better to play that singles and doubles. Place the ball in the cap and run. That is going to be the superb strategy for the upcoming overs, 2-3 overs. We'll be able to see that more. And Rahul on the other side, he's going to wait for the bad ball to come. Once he's able to get that bad ball, once he is able to get that ball in his reach, then he will try to make sure that he will send it out of the park. And for the other balls, he will try to just guide it into the cap as the field restriction is over. Field is open now. So singles and doubles, they will try to focus more on and wait for the bad ball to come. This time got a wait over the bowler and got a boundary. Strong use of bottom hand from Rahul this time. It's not that easy shot to play. This was a back of length delivery and he played in the V shape, straight as an arrow. With the arm strength. You are able to a glimpse of what the arm strength he's having. He's got a direct hit, I believe, but he's safe or not. Yes, he's safe. No need to go towards the third umpire. He's able to save himself up. That's a good throw by the keeper. He's well inside the crease. He's inside the second crease as well. So no harm. Good running between the wickets. They saw that a single can be taken and they went for it. That's how you go because they have got a boundary at the first ball. Then strike rotation, they are focusing more on that. That's what we were discussing about. They will go like this for the upcoming 2 overs at least because in the last over they have lost a wicket. And that is a smart strategy to go because you cannot hit every ball out of the park. And that's a sensible cricket from IIT ROPAR. Trying to use the crease there, this time bitten. Was
Rahul Bhuria, he's playing at a different level. He's now with a dot. So you just don't want to stop there. Just want to punish the bowlers. Just want to capture that runs, and he's gonna get that because if you look at the classic connection he's having with the bat when he's connecting the ball, excellent timing and the strength. So he's having a deadly combination. Because of that, he's getting the runs flawlessly, easily for the team. Another boundary of this over. That was a classical drive. It was an intentional shot. Open the face of the bats, full swing of the bat, and then got a boundary again. The same kind of result, I believe. He's just destroying the bowlers. Fantastic, unbelievable striking from Rahul. Excellent total is there on the board. 8 overs gone. 82 for 3 is the score. They badly need that wicket of Rahul Bhuria, especially. That is going to help them to put the pressure again on ROPAR. Otherwise, they are playing a good game of cricket here. Yes, they are able to get that wickets, JODHPUR. But the important man, the crucial wicket is still missing, Rahul Bhuria. Chipped it in the air. And a bounce. One bounce. Boham. And Rahul, he's back on strike. Dipanshu Yadav, the new bowler. He do wonders for the team. Can he do? Can it do his? Got an important wicket here. The set batter departs. And just have a look at that again. Flight that always invites the batter, and then he kept it very slow. Lopez is involved in that ball, and that's a classical take in the end by the fielder. Wasn't an easy job to take that kind of a catch. He was diving towards its right, and he's able to maintain his balance in the end. You need that support also. Cannot do that job alone. You want to take a wicket, then you need that support from the fielders as well. And now the pressure will be back on IIT ROPAR because the set batter departs.
And he was the reason that the decent total is there on the board, because otherwise the batters are getting out. But in his time, Aditya Meena, he was facing his first ball, caught that depth, and he just forgotten what has happened in the past. He's focusing on the present, and he caught that room, punched the ball into the gap. There was a gap in between the point and the covers, and he's making sure that he's placing the ball in the gap. What a way to get off the mark. That shows the confidence he's having in himself. One more time, but the fielder right there this time just shifted that fielder towards the covers, and that's why he's not able to get that boundary. But Dipansh Yadav, the credit has to be go to this man, because he's bowling his first over, and the set batter was there. He was playing a good game of cricket. He was striking the ball well, and he's able to get out. One more time, the ball is up in the air, and no! Phenomenal! That's something inexplicable. What a catch! Catch of the tournament. He's strong candidate of that. What a catch! We have seen two good catches, extraordinary catches in the span of 2 overs, and that's why the 5th wicket we are able to see here. The credit has to be go to this fielder, because it was a full toss delivery. The classical dive. You need that support. That's what we were talking about, and you have got it in this over as well. Back-to-back wickets here for Dipanshu Yadav. He is the game changer. He is the game changer for Jodhpur. कमाल की है इस खिलाड़ी ने, कमाल की गेंदबाजी, लेकिन क्या दर्शनीय फील्डिंग थी वहां पे बाउंड्री लाइन पे। एक बार वो राइट की तरफ डाइव लगा के, और इस बार लेफ्ट की तरफ डाइव लगा के, लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच अद्भुत प्रदर्शन वहां पे फील्डिंग का। इस बार भी आने दिया बॉल को अपनी तरफ प्लेस करने की कोशिश, लेकिन सीधा हाथों में, और यहाँ पे दबाव बढ़ेगा अब। कमाल की फील्डिंग देखने के लिए मिली थी जरूर। उस वजह से कहीं ना कहीं दबाव जरूर होगा। अब 88 पे 5 स्कोर है अब तक 9 ओवर के बाद। कमाल की गेंदबाजी, दीपांशु यादव ने वो काम करके दिखाया। 2 विकेट, बड़े विकेट उनके नाम एक ही ओवर में, पहले ही ओवर में, और केवल 6 रन दिए इस ओवर में। पूरी तरह से वो मोमेंटम को शिफ्ट किया है आईआईटी जोधपुर ने अपने तरफ, और श्रेय देना पड़ेगा सभी को कि जो विकेट है वो विकेट एक्चुअली उनकी नहीं है, वो फील्डर्स की है। तो कमाल के कैच पकड़े, नहीं तो फिर वो कहानी कुछ और हो सकती थी। आसान काम था नहीं। Time full toss delivery. That's what pressure brings to you. That was a full toss delivery, but still he's not able to free his arms. He struggled to free his arms because that 2 wickets. That is created the pressure on the batters now. Gone. Stumps dismissed here. Chandrapal Singh. That was a cracker. An absolute pitch of a delivery. That was something unplayable. And they have lost the 6th wicket now. Momentum, they say. And you can see the example. What momentum can bring. At one point of time, the constant hitting that we are able to see, but that back-to-back wickets and that
streak of losing wicket here continues. 88 for 6. IIT Jodhpur, they have just changed the rhythm of the game in that 2 overs of time. That's the beauty of this game. Anything can happen at any point of time. It's the game full of surprises. And the surprises has been given to ROPAR by the bowlers of IIT Jodhpur. कमाल की गेंदबाजी, कोई शक नहीं उसमें. और जैसे कि आपको सपोर्ट मिलता है, वो टीम वर्क हमेशा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी फील्ड में, किसी भी गेम में. और यहाँ पे वो टीम वर्क देखने के लिए मिला, वो पार्टनरशिप देखने के लिए मिली. पहले चंद्रपाल सिंह ने वो विकेट चटका के दी तीसरी, उसके बाद में उपसेट बैटर को चलता किया पिछले ओवर में, उसके ठीक बाद एक और दर्शनीय कैच. तो फील्डर की भी उतनी ही तारीफ करनी पड़ेगी जितनी की बॉलर्स की हम कर रहे हैं, क्योंकि वो विकेट होता ही नहीं अगर वो कैच पकड़ ना पाते. पहले दौड़ लगाई, उसके बाद में डाइव लगाई, दोनों कैच एकदम बढ़िया. और फिर चंद्रपाल सिंह ने इस ओवर में भी वो सफलता दिलाई, एक और सफलता. अब 88 पे 6 है स्कोर. मोमेंटम अब पूरी तरह से आईआईटी जोधपुर के पास. रन रेट अभी भी बढ़िया होगा, लेकिन वो विकेट जा रहे, वो गुच्छों में विकेट जा रहे, उस वजह से कहीं ना कहीं दबाव होगा बैटर्स के ऊपर. कहां तक पहुंच पाएगी ये टोटल, ये देखने वाली बात है यहां से. दूसरे के लिए आना चाहते थे लेकिन मना किया. अच्छा कॉल वो, कोई जोखिम लेने की अब जरूरत है नहीं, फंस गया है मुकाबला ये. I always say that spend some time when you are new to the pitch, when you are going there, just stay there. That is primary focus. The emphasis should be given on that, and then you can go for the big shots. And if you play that dot deliveries when you are just starting off, that's okay. But the most important thing is to stay there on the pitch. And that they've got a lesson today. Multiple runs in that. The ball couldn't touch the boundary rope, but I think they have got 3 on that occasion. Got a glimpse of what pressure can bring. They've also got a lesson that why it is important to stay there on the pitch when you are coming, when you are just getting in. Otherwise, this can happen. Played with a soft hand. That is something you want to see more. Just guide the ball into the gap and go for the singles and doubles. Just try to build a partnership, and you are good to go, because it's still at 93 for 6, and we are in the 10th over. So still we have that 10 overs. So ROPAR will have that focus to go for 150 at least from here on. For that, they need to stick in. They don't want to lose a wicket here. Not to end that over. It's 93 for 6 after 10.
प्रोजेक्टेड स्कोर 186 का है। नजरें वहीं पे रहेंगे, लेकिन अब पहले वो थोड़ा सा समय लेने की कोशिश होगी दोनों बल्लेबाजों की। अभी अभी आया है मैदान पे, तो थोड़ा सा प्लेस करेंगे बॉल को कैप्स में। 15वें ओवर तक वहां पे कोई रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। अभी भी डिसेंट सा टोटल बोर्ड पे है, अभी भी वो रन रेट मेंटेन किया हुआ है। बस आप डटे रहिए मैदान पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। और दूसरी छोर से आईआईटी जोधपुर की यही कोशिश रहेगी कि कैसे वो बड़े विकेट्स और आए, कैसे वो बैक टू बैक विकेट्स फिर से वो चटकाए। जल्दी सिमटना चाहेंगे इस पारी को। फील्डिंग काफी अच्छी है आईआईटी रोपार की, आईआईटी जोधपुर की। जिस तरह से वो शिकंजा कसा स्पिनर्स ने, उसके बाद में चंद्रपाल यादव, उनके नाम भी तो बड़ी सफलता। 2 ओवर में 2 विकेट, तो कहीं ना कहीं वो विकेट्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, उस वजह से मोमेंटम थोड़ी सी शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पे कभी भी था मामला, बिल्कुल बैट के पास से गई थी गेंद। 4 बैक टू बैक डॉट्स वैभव सिंह की ये पहली ही ओवर है, लेकिन कमाल की गेंदबाजी हुई है। फ्लाइट दी थी इनसाइड एज और बाल बाल बचे। सिंगल हासिल कर पाएंगे, लेकिन बॉलर की जीत है। जिस तरह से शिकंजा कसा है वैभव सिंह ने पहले ही ओवर में। और यही होता है जब आप पार्टनरशिप बिल्ड करते हो। हम हमेशा बात करते हैं बैटिंग पार्टनरशिप की, लेकिन बॉलिंग में भी बेहतरीन पार्टनरशिप्स होती है। एक वो प्रेशर बिल्ड करता है, दूसरा विकेट चटकाता है। एक रन्स रोक के रखता है, दूसरे के नाम वो सफलता लगती है। तो हमें बिल्कुल लगता है कि उस बॉलर ने वो अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन उसका श्रेय पिछले कई ओवर्स को भी जाता है। जहां पे वो प्रेशर बना के रखा था, रन्स दिए नहीं थे, लेकिन यहाँ पे रन्स मिल जाएंगे थोड़े। एक तो आसानी से मिलेगा, दूसरा चाहते थे आदि, लेकिन मना किया तन्मय ने। 11 के बाद 96 पे 6। IIT Jodhpur, they have got variety of options. They can bring any bowler at any time, because that's the variety they're having. We're seeing excellent over, comes to and 3 runs considered in that. This time couldn't grab that runs. Hariom Changir, he was expensive in the first over. And that's a good way to bring him up, because the pressure is there on the batter. So they are trying to release the pressure of Hari, because they're just trying to give him confidence by having that number of overs. They've got license to try, because oh, that's again an excellent catch, I believe. Full tossed and gone. There's a 7th wicket for IIT Jodhpur. Excellent catch that was. Catches win matches, they say, and here is a perfect example of that. That's the third diving catch we have seen in the same innings. And that is showing the practice they are having before the game, before the tournament. They must be having that excellent practice of catches, the diving catches.
The wicket isn't there definitely on the name of Hari, but it's a contribution by the fielder. Again, a good diving catch. That's a massive support the ballers are getting from the fielders. And that is the reason we are able to see that scenario. It's 96 for 7. At one point of time, it's 82 for 3. Remember. And in that fraction of runs, in that fraction of time, the momentum is totally changed. It shifted towards IIT Jodhpur. Oh, he's not able to get to where the ball went. He was just tracking the ball. And the single has been grabbed. Now IIT Jodhpur will try to sum up this innings. Will try to get 3 wickets as early as they can. Trying to cut the ball, but finds again an excellent over, excellent catch in that over that we have seen. And Hariom Jangirdev, he has got a wicket, the first wicket on his name. 12 gone, it's 97 for 7. What a great story in the first innings. He has got that 6 hitting machine. When he got out, then the whole team is collapsed. And the credit has to be go to that fielding effort. We have watched that 3 excellent catches in the first innings, in this same innings. And the scenario would have been different if they have dropped the catches, but and that was very tough to catch. Very tough to take that catch. They were running all around, covering the distance and then diving. Sometimes you need to give that credit to the fielders, and it's because of them that we are able to see that this situation. Where he's getting a turn. He will try to place the ball again and again in that area. He's giving that a good flight to the batters because he just want to give that in wide. You can go for the big shots. Again, an outside edge. Beautiful piece of bowling from Weber. His bowling is second and 5 back-to-back dots in this over. Weird Deepak, who just came in. Tanmay is just trying to say a few words, trying to motivate, trying to say what you can do. Again, the plenty of flight was there, but he played it grounded, risk-free. A maiden over comes to an end. 13 gone, it's still at 97. कमाल की गेंदबाजी सभी की श्रेय देना पड़ेगा बॉलर्स को भी जिस तरह से वो पकड़ के रखा हुआ था उससे बैटर की वो हिट 6 हिटिंग मशीन की विकेट आई तब से कहानी पूरी तरह से पलट गई है अच्छा शॉट ये लेकिन सिंगल ही मिल पाएगा विवेक दीपक फिर से स्ट्राइक पे वो सेट होने का मौका दिया नहीं बॉलर्स ने जब भी वो बड़ी विकेट आई 68 रनों की पारी खेल के गए थे अपनी टीम के लिए उसके बाद में वो विकेटों की बरसात थोड़े से वहां से रन तलाश रहे कहीं ना कहीं
डटे रहने की जरूरत थी, अच्छे से किया है अब तक ये दोनों ने। रन्स आए नहीं है मैदान पे। अब यहाँ से थोड़ा सा गियर शिफ्ट करने के बारे में सोचेंगे, एक आध ओवर और खेलेंगे तो कुछ अच्छे शॉट्स यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जरूर। लहराती हुई गेंद हल्के हाथों से खेला था, कट किया था, अंतिम समय तक वेट किया, बल्ले का मुख खोला तो थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल उस वजह से रोक नहीं पाए फील्डर। और उतना लाइसेंस तो बनता है, थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर सकते हैं। जिस दर्जे की फील्डिंग हुई है शुरुआत से, तो 3 कैचेस इंपॉर्टेंट पकड़े तो ये चल जाएगा एक बार। और कोई गलती थी नहीं वहां पे फील्डर की, बॉल थोड़ी सी उछली अचानक से, तो कोई भी फील्डर वहां पे रोक नहीं पाता। Again played with the soft hands. End of an over. 100 cups above the board after 14. th Inter-IIT Sports Meet is going on, and it's going on strong. You can catch all the live action on YouTube channel of Inter-IIT Sports Meet. There is plenty of action is remaining. We are in a day 3. Still a lot of excitement is there. Good shot. That was finds a fielder at the boundary line, and that's a good thing because in that squares area, they also know that the batters will have that free hand, and they just don't want to give that boundaries. Yes, they are okay with the singles and doubles, but they just don't want to give that boundaries and maximums. So the bowlers are trying to stick to that line and length outside the off stump, just like this, and creating the chances for the team to get that wickets. So again, very close to the stumps, missed that out off stump. Chipped it in the air. Again, very close to the fielder there. Only a single as the fielder was right there in the deep square, with deep mid-wicket area. Excellent comeback from IIT Jodhpur. Right over the score was 82. And then these multiple wickets changed the rhythm of the game. Good drive this time. It's going to give plenty of runs. Again, a diving save. That's what we were talking about. Fielders are supporting the bowlers. They are having an excellent job here in today's game. Saving the runs, getting those important catches. Again, the flight has been given and it's accepted by the batter. Wanted to get that second and he's going to get it easily. 15 gone, it's 108 for 7.
Last 5 overs of the game, 30 balls. Last 30 balls, they will try to go at least at 140. If you talk about run a ball, if you think about run a ball, it's 140 and 50 possible. It's still possible. Just need to play ball by ball. Play according to the minute of the ball. Forget about the boundaries and maximums. Just try to place the ball into the gap and grab that singles and doubles. And if you are able to get that boundaries, then it's cherry on top. But don't go for the risk-free shots. Don't go for the risky shots. In fact, rather concentrate more on risk-free shots, grounded shots. You can get that singles easily. The fielding is don't have that restrictions now. Easily place the ball into the gap, and you have spent the time as well. That is also not the issue that you are pitch. You need that singles and doubles. That's it. Forget about the boundaries. Forget about the lofted shots. Just go and play ball by ball. Get that singles. That is gonna be the strategy. That should be the strategy of these two batters because 150 they should aim, and for that they need to hang in there till last moment. Was too wide. He played it. Would have gone for the wide if he hasn't played that. Drives the ball again. The fielder will be there, stopping the boundaries. And he's keeping it very wide. It's outside the hitting arc of the batter. That's why not able to smash the ball well. And even though he's able to smash that, the fielder is right there, the covers, the boundary line. 16 gone, it's 113 for 7. Change in the fielding. Just wanted to go for that fine leg. Chandrapal Singh is also impressive. Each and every bowler is having that wickets on his name. Chandrapal Singh, he has got 2 wickets, 22 2 runs conceded in 3. He's bowling his last over of his spell. Bring it very tight towards the line of the ball, middle stump. Run rate has been reduced, has been decreased down to 7 now. It's below 7 in fact. Well, it's because of that wickets, that middle overs. They're able to put that pressure on the batters, but this time open the face of the bat and he's coming down for the second and he's gonna get it easily. That middle overs were fantastic, where IIT Jodhpur they have got a couple of wickets. Back-to-back wickets changed the rhythm of the game, and now these two batters trying to carry that game towards the deep, trying to stick in there, trying to get that singles and doubles, important runs for the team. There is going to be a wide extra run that has been added to the total of IIT ROPAR. This time it's not going to get a single.
That's a smart batting by Vivek and Tanmay. Just trying to place the ball, waiting for the ball to come. Concentration has been given on singles and doubles. Flick of wrist. The fielder is right there at short square leg. He's not going to get that second. The projected score, if you see, as at 141. They will try to make it at 150. He has to ball it again. That's something you don't want to see, because the pressure is right there. And if you are able to get that two wides, two important extra runs that has been added to the total, somehow the pressure will be released by a bit. This line is very good. No matter what format you are playing, this line is pretty good on the off stump area, pitching in and going in as well. Going for the big shot this time. Connection was superb and finds a gap. Much needed boundary. Was into the slot in his arc and opened the face of the bat, swinging the sword, swinging his weapon. And the ball touched the boundary line within a fraction of seconds. Boundary to end that over. That's a big over. 17 gone. It's 122 for 7. Up in the air straight away. Into the no man's land. Would be happy to see that. Chipped in the air. Went into the no man's land. No fielder is able to reach there. Use his feet and then saw that the ball is of far away from his arc. Stopped there, changed the mind, and stayed back in the crease. Oh, that is a gift. Hammers that. Beautiful shot that was. It was a gift and he's not gonna miss that. It's out of the boundary line. It's gonna be a maximum. 130 came up already on the board, so they will now plan 160, 70. Again a good shot, used his feet, and it's onto the road. Brilliance is giving that example what brilliance look like. Excellent timing on the ball, just going towards the pitch, and it's out of the park again.
Back-to-back sixes. We were talking about 150, but Tanmay, he said, why 150? I will try to go 160, 170. That's the total I'm planning for. Again, the flight in outside edge, but a drop catch. How costly it's gonna prove, that we will see in the upcoming overs, but there was a chance that has been created by Vapor. He's got back-to-back sixes and then outside edge. He's able to find from the batter. Chipped it again. That is going to be a dot ball. We have seen classical hits in this over from Tanmay. He tried to make this over very big, and look at the turn. The ball changed the direction after pitching, literally. That's a smart pick by the keeper. Look that out of thin air. 18 gone, it's 137 for 7. And the gears has been shifted. He's able to put the leg on the accelerator. Let's see how fast they go from here on. Last 2 overs and they will at least aim for 160. Tanmay, he's hitting the ball so well and he's on strike now. विकास चौधरी इनके नाम 2 विकेट से और एक इम्पोर्टेंट ओवर डालने के लिए रेडी. पुल करने की कोशिश और एक और अच्छा शॉट. कमाल की हिटिंग तन्मय की. आगे जरूर आए थे लेकिन चौका हासिल किया. अंतिम समय तक नजरें बनाई रखी बॉल के ऊपर कि कहां फेंक रहे. देखा कि थोड़ा सा शॉर्ट पिच आ रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट किया खुद को और पहले ही गेंद पे वो चौका हासिल किया है. 141 है अब स्कोर. 141 पे साथ एक अच्छा टोटल अपनी टीम के लिए दिलवाते हुए तन्मय. सफल हो गए थे क्रीज में. एक बार फिर से डालना पड़ेगा, ये वाइड होगा. और चीयर देखिए सहारता करते हुए पूरा डगआउट. ये रन्स चाहिए थे कहीं ना कहीं आईआईटी रोपार को. बीच में बिल्कुल फंस गया था मुकाबला, लेकिन यहाँ पे खुद को समय दिया, फिर समय ने इनको समय दिया और समय बदलता हुआ तन्मय का. इस बार अच्छी गेंद पड़ के अंदर की तरफ आई हल्की सी, और जाने दिया इसको. थोड़ा सा कंफ्यूज रहे उस वजह से. अच्छा किया कि जाने दिया बॉल को. एक बार फिर से वॉटरमैन का भरपूर इस्तेमाल, लेकिन वो दूरी तय नहीं कर पाया. हल्की सी रुक के आई गेंद, उस वजह से कहीं ना कहीं वो कनेक्शन उतना खास नहीं. एलिवेशन काफी ज्यादा लेकिन डिस्टेंस नहीं मिल पाया. इधर आ चुके थे, पहुंच चुके थे, लेकिन थोड़े से दूर रह गए. उंगलियों को फेरा था, लेकिन क्या पिक किया है. फील्डर के पास जाएगा, लेकिन ये शॉट्स चाहिए. कनेक्शन हम बात करते तो वो अच्छा होता हुआ दोनों का. अब 6 ओवर अब तक. ये बाउंड्री के बाद केवल 3 रन आए. अभी तो गेंदे बाकी है. Shuffle sit in and gone. That's a big fish on Vikas' name. Rolling his fingers over the ball, trying to go for the slow one again and again, and he's getting the result. He's got a result again. Remember, he's the same man who is able to get that first 2 wickets on his name for the team.
And when team requires, team is in the need of the wicket, he's able to take that wicket of Tanmay. That's a big Fast wicket. there. This canopy, red canopy. A very good over from Vikas Chaudhary. He's got a boundary at the very first ball in white, and then it's a good classical comeback in the same over. एक बार फिर से प्ले एंड मिस, कमाल की ओवर और कमाल की स्पेल विकास की हुई खत्म। वो एज लगा नहीं इस बार, 19 के बाद 144 पे 8। Ankit Jat is going to ball the last over. 144 is there on the board, and the main reason was the shots from Tanmoy. He's looking at the ball, where the ball went. He's not able to get that. It's a direct hit on the stumps right in target. Just have a look at that again. He came forward and collected the ball nicely, and he's able to put the bat. He's able to track that bat inside the crease. Ravi Beniwal, that is a new batter, came in because that Tanmay's wicket in the previous over. Couldn't find that edge. Oh, able to get that single. Quick single has been taken. Things would have been different if Tanmay is sticking in there. He lost his wicket in the last over. That's why you can see that change in the scoreboard. IIT Jodhpur, they are able to restrict that runs after that Tanmoy's wicket. Will not get a single. Good over so far. 3 singles and a dot. He's 7 for 80 is the score. Went for the massive. That's a biggie. For the full toss, and it's a gift again. And Ravi Beniwal is making sure he's gonna send it out of the park. He's got that chance and he converted that chance into an opportunity. That's a big six, and with that 150 comes up on the board for IIT ROPAR. This time couldn't make it. Good connection, but still in the gap. Easily got that 2 runs on the board. Excellent total, I believe, because at one point of time they were losing the wickets. They need a good partnership, and Vivek and Tanmoy, they have done the job there, and it's 155 you have got in the first innings. So a lot of twists and turns in the plot, and in the end, IIT ROPAR, they are able to get that 155 on board. Rahul Bhulia, he was the game changer. 68 from 28, 9 fours, 3 sixes. And then Tanmoy, 33 from 26. So these two batters and a good support by Vivek Deepak. With that 155,
we have got in the first innings good bowling so far. Vikas got 3 wickets, and then Chandrapal and Dipanshu, they have got 2 wickets, and Hari has got a 1 wicket on his name too. So 20 overs gone. It's at the end of the first innings, and 155 we have got. So if IIT Jodhpur want to win this game, they need 156. So the chase is coming up. Don't go anywhere. After a short break, the chase will be there.
के जुबां पे बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा हमारा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम सुनो देखने को करे इंतजार ये मैदान एक एक पसीने के बूंद बूंद से सींचा है ये मैदान सुनो देखने को करे इंतजार ये मैदान एक एक पसीने के बूंद बूंद से सींचा है ये मैदान सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया हराने का मकसद नहीं है जीतने का इरादा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम
के जुबां पे बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा हमारा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम सुनो देखने को करे इंतजार ये मैदान एक एक पसीने के बूंद बूंद से सींचा है ये मैदान सुनो देखने को करे इंतजार ये मैदान एक एक पसीने के बूंद बूंद से सींचा है ये मैदान सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया हराने का मकसद नहीं है जीतने का इरादा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दम इंडस्ट्रियल ड्रोन रे
will come back again. That was close call there. On the very first ball also he placed the ball. The sleep is right there, so must we keep that in mind as well. Again, that was an edge, I think. He's gonna get a boundary, but 3 balls. He was just trying to hit that. This is the second time he's able to beat that batter and miss that keeper and the slip too. Gonna get a boundary for sure, but that was a good ball, a very good ball that was. Indrajit started off. He's coming around the wicket for the left-hander. Shifted in the air into the no man's land again. That 4 balls were actually right on the money. The 3 balls, something happened. And the 4th ball also went into the no man's land. So batters are not able to find that connection with the bat so far. Excellent bowling that was from Indrajit. IIT Jodhpur need that 156 if they want to win this game. IIT ROPAR starting off with a left-hand spinner. And they have seen that the spinners are getting that turn. Starting off with a spinner again straight away. The opening pair of IIT Jodhpur, Nikhil Garg and Sachin Rathod. Plays the ball into the gap, but the fielder is right there. Not able to get that single. He's just trying to get off the mark with the singles and doubles, but 1 gone, it's 7 without loss. A lot of twists and turns we have seen in the first innings. They've got a couple of wickets, that 2 wickets early, and then Guria. He was the batter. When he was playing, the pitch was looking different, and when he got out, the pitch was looking totally different. So that's the impact he's able to put on board in this today's innings. 149 required from 114 balls, so it's still within the range. Some good shots they will plan in the power play. At the same time, they will try not to lose the wickets when the ball is swinging in, when the ball is getting that help to the bowlers. Tanmoy is in charge again. He's really good with the bat. The way he was batting at the last moment, he has given the time, and then the time rewarded back. समय समय की बात है. अब यहाँ पे क्या वो समय ले पाएंगे बल्लेबाज, या फिर तन्मय चलता करेंगे, वो सफलता दिला पाएंगे टीम के लिए, ये देखने वाली बात है. अराउंड द विकेट आ रहे फिर से वो एंगल प्राप्त करने के लिए. ये देखिए बिल्कुल स्टंपों के ऊपर रखने की कोशिश, और कीपर भी काफी आगे खड़े हैं. उनको पता कि ज्यादा पेस है नहीं. इनकेस अगर बैटर थोड़ा सा आगे जाएंगे, वो स्टंपिंग का चांस होगा, तो उस वजह से थोड़ा सा आगे खड़े. और राइट हैंडेड बैटर के लिए ओवर द विकेट, क्योंकि वहां पे वो एंगल मिलता है ओवर द विकेट से ही, तो वहां पे कोण चेंज करने की कोई जरूरत है नहीं. एक और सिंगल, ये अच्छी बैटिंग, सेंसिबल बैटिंग मैं कहूंगा. और IIT रोपार को भी पता है कि वो इनिशियल विकेट छटकाने की बहुत ज्यादा जरूरी है. IIT जोधपुर अभी टाइम ले रहा है. ये 2 बल्लेबाज अभी अभी आए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे विकेट का
पतन होने का चांस रहता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं वो फोकस कर रहे हैं विकेट पे। एक बार अगर वो विकेट आ जाएगी तो फिर वो दबाव बना पाएंगे फिर से IIT रोपार। ये बढ़िया शॉट है, पिकअप शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। नजरें जमाए रखी और वहां पे तन्मय खेनाम ये बेहतरीन सफलता, पहला ब्रेक थ्रू देते हुए अपने टीम के लिए। फील्डर वहां पे मौजूद थे और चलता किया सेट बैटर को। अच्छा शॉट था ये जरूर, विकेट जरूर आई थी, लेकिन पहले ही बॉल पे वो आके ऐसा छक्का लगा ना, आसान काम होता नहीं है। कमाल की गेंदबाजी हो रही थी, वो विकेट जरूर हासिल की थी, लेकिन ना वो मैक्सिमम कमाल का था। सुधांशु अभी अभी मैदान पे आए, पहला बॉल खेल रहे थे और इंटेंशन साफ करते हुए सीधा, मैं रुक के खेलने वाला हूं नहीं। फिर भी हो सकता था मिक्स अप, लेकिन वो पिक नहीं कर पाया अच्छे से और थोड़ा सी फ्रस्ट्रेशन दिखता हुआ सुधांशु पे। वो कॉल थी निखिल की, हाँ ना थोड़ा सा मिक्सअप, और मिक्सअप जब होता है तो मौका बनता है, मौका बना था, लेकिन वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था, कलेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। अभी अभी विकेट आई है तो वही समझाते हुए सुधांशु। और हम हमेशा देखते हैं कि तालमेल में जब कमी होती है तो करीबी मामला होता है। हल्के हाथों से खेल के वो सिंगल निकालने का प्रयास जरूर, लेकिन अब निखिल ने मना किया, अच्छी बात है ये। जब श्योर हो नहीं तो बिल्कुल डटे रहिए, कोई जरूरत नहीं है रन भागने की। एक मैक्सिमम और एक विकेट इस ओवर में, 2 ओवर के बाद 15 पे 1, IIT जोधपुर। दूसरे ओवर में, तीसरे ओवर में इनफैक्ट, पहले 2 ओवर में 15 पे 1 है स्कोर। वो विकेट जरूर चटकाई है, लेकिन वो सुधांशु का छक्का, वो दबाव बनने नहीं दिया है खुद पे। आते ही बड़े शॉट का प्रयास, निखिल थोड़ा सा साथ निभाने की कोशिश करेंगे, सिंगल से बल निकाल के वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करेंगे, और एक छोर से सुधांशु बड़े शॉट के लिए जा सकते हैं पावर प्ले में। इंद्रजीत is bowling his second over, 8 runs considered so far, and again a single. That's a sensible batting. That's always we love to watch that batting. That's always we talk about. You cannot go for the big shot on each and every ball. Need to rotate the strike.
Again, same plan was there, but again a good fielding by Indrajit himself. Would stop by using his foot and then stopped a single. The main focus will be given on the stopping the singles. Focus is there. Bowlers will try to force the batters back-to-back dots, and batters also know that. That's why they're keeping it very simple, pushing the ball into the gap and grabbing the singles. That is going to be wide. He has to bowl one more time. The mindset is good. He's just trying to hit that side the off-stump area. That is the effective length, no matter what format you are playing. But just it was too wide. It's wide given by the umpire. But nothing wrong in the mindset. Nothing wrong in the strategy. It's always effective when it's T10 also. Only a single again. And that's how you go. When you have lost a wicket, you need that time. And Sudhanshu is playing that sensible cricket, not going for the big shots on each and every ball, respecting that good balls, and hitting those bad ones. He started off with a big shot and then he's calming himself down, waiting for the bad ball to come. This time wanted to sweep, but it's surely gonna miss that leg stump. Appeal was definitely there, but they also know that it's surely miss the leg stump. 3 gone, it's 21 for 1. सोचा कि यहाँ से विकेट्स की है जरूर, विकेट चाहिए और ज्यादा विकेट चाहिए आईआईटी रोपार को, और दूसरी तरफ से दो बैटर संभाल के खेलने के लिए कोशिश करेंगे, गेम को डीप ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 102 गेंदों में 135 चाहिए। यहाँ पे अगर विकेट आएगी नहीं, लंबे समय तक वो पार्टनरशिप बिल्ड हो गई, तो फिर वो आसानी हो जाएंगी इस मुकाबले को जीतने के लिए आईआईटी जोधपुर को। और वो दिमाग में है जरूर, जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, रिस्क फ्री शॉट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल शॉट्स खेल रहे, सिंगल्स डबल्स के साथ वो स्कोरबोर्ड को चलता रखा है। New ball Ravi, and very well played. It's in the gap. He's gonna get a boundary on the very first ball. That's a beautiful shot. Good use of his wrist and just guiding the ball into right direction into the gap for 4. Absolutely no risk. And he's able to get that boundary on the very first ball. So the pressure will be definitely there on the Ravi. He's bowling his first over and got a boundary on the first ball. Cuts that hard, but finds the fielder straight away. And you are able to get that boundary on the first ball, so it's easy for the batters to play that over because they have already got enough runs on the first ball, so they knew that they would be okay for singles and doubles, but that's something you don't want to see. Risk-free shots they were targeting, and now the risk has been taken and damage has been received. Just wanted to clear the infield and nothing wrong in that strategy, but it's just that he didn't have that timing on the ball.
Second wicket for IIT ROPAR. We're talking about that risk-free shots. He was playing the ball so well with the soft hands. He's just placing the ball now. He's got that confidence, and that confidence has given the kick. Confidence has given that lot of energy. Now he just wanted to go for the maximum, and that's when things went wrong. Ravi Beniwal has got a first wicket on his name too. 131 required from 99 now. 30, 25 for 2 is the score at JODHPUR. Oh, uneven bounce. The ball pitched in and just uneven bounce on the pitch. Extra bounce was there. So because of that, not able to play the ball there. Wanted to push the ball in the gap. Ravi Beniwal is able to get that 6 runs. With good shot that we have seen from his bat now. That's a good contribution. Small but impactful. And he's really good with the ball so far. Outside edge, but the third man fielder is right there. So we'll settle down for the single. He's bowling his first over, making sure that he's giving that contribution to the team. With the bat, he's able to get that maximum. Now he's for the team in the first over. So it's a dream day for them. Dream day for him. आखिरी इनिंग्स ओवर की 26 पे 2 स्कोर है. सिंगल पटोरना चाहते थे लेकिन मिलेगी नहीं. डॉट के साथ ओवर की समाप्ति 4 के बाद 26 पे 2. अभी तक दोनों टीमों को वो मदद मिली है. रन्स भी थोड़े से आए. रन बॉल चल रहा है यहाँ पे सिनेरियो और विकेट पे चटका ही है IIT रोपार ने. तो कहीं ना कहीं यहाँ से अब किस तरफ झुकता है मुकाबला ये देखने वाली बात है. और प्ले के आखिरी 2 ओवर्स यहाँ पे जरूर प्रयास रहेगा सुधांशु का, खासकर वो बड़ा शॉट आए लेकिन वहां पे चांस भी रहता है, रिस्क रहता है थोड़ा सा आउट होने का भी. तो कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस है कि वो पार वो शॉट खेलने का प्रयास रहेगा. अदरवाइज थोड़ा सा संभाल के खेलने की कोशिश करनी पड़ेगी. विकेटों को अपने हाथ में रखना पड़ेगा. एक बार अगर रन कमाए तो चलेगा लेकिन आखिर तक डटे रहने की कोशिश होनी चाहिए. ये अच्छा शॉट है. डॉट के साथ शुरुआत जरूर की थी लेकिन वो कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे. तो स्वीट स्पॉट ढूंढने की कोशिश हो रही है यहाँ से. निखिल स्ट्राइक पे है. उनका काम यही है कि थोड़ा सा सिंगल डबल्स के ऊपर ध्यान दिया जाए, तो स्ट्राइक पे ले लिया जाए सुधांशु को. ये देखिए हल्के हाथों से खेलने की कोशिश लेकिन चिप सा किया था. बॉल थोड़ा सा ग्राउंडेड खेलना चाहते लेकिन थोड़ा सा ऊपरी हिस्से पे लगी बैट के, उस वजह से लॉन्ग ऑन की दिशा में वो सिंगल आ पाया. सिंगल लेना जरूरी था, वो स्ट्राइक देना जरूरी था सुधांशु को, वो दे दिया है. It was a good drive again, but finds a fielder. Look at his line and length. He's just sticking to the basics, not trying too much. Just bowling in quickly, pitching in, going out. That deliveries again and again he's targeting it and getting a good result for the team. He's bowling his third over, 14 runs considered. Looking for a wicket in Darjit. Played with the soft hands and that single has been taken
Quick single has been taken. Good bowling so far from Inderjit. Wanted to take that single, but some mix-up and settle down with the dot. 5 gone, it's 28 for 2. Just a correction, it's 29 for 2. 5 gone. It's last over of power play. And in Ravi is going to continue from other end. He has given a wicket for the team, so the captain has given him an opportunity one more time to bowl that crucial over. And there's always a chance to take that wicket in the last over of power play because the batters will try to go for the big shots. They also know that it's the last over of power play, last over of the field restrictions. And in that search, they got off plenty of times. ये देखिए आउटसाइड एज लगा था, विकेट की बात की थी और सही स्ट्रेटेजी यहाँ पे रवि की। थर्ड मैन को काफी फाइन रखा है, इनकेस अगर आउटसाइड एज भी लगता है तो फिर वो बाउंड्री के ऊपर रोक लगाने की कोशिश रही है। टाइप जरूर लगाया था कीपर ने, लेकिन काफी दूर था। अच्छा अटेम्प्ट मैं कहूंगा। बिल्कुल जड़ों में गेंद, कोई मौका था नहीं, एकदम सरप्राइज कर दिया। और ये खासियत रही है रवि की, अब तक लाइन एंड लेंथ से पटके नहीं है। इधर वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप एरिया, अदरवाइज वो यॉर्कर के लिए जा रहे हैं, तो दोनों के ऊपर रोक लगाने की कोशिश है। उनको भी पता है कि बैटर थोड़ा सा यहाँ पे बड़े शॉट का प्रयास करेंगे। That's a good ball again, played with the soft hands. Oh, that's a... didn't waste a single second. And 25 more required from 87 balls. So the bowlers knew that. They know that if they're able to get that back-to-back dots, batters will throw a wicket in search of that big shot. Again, swing and a miss. Look at his line. He's focusing more on the outside, the off-stump area. Otherwise, he's just going fuller into the slot. He's not giving that opportunity to free the arms. That's why he's able to restrict that runs for the team. Last 2 balls of power play and it is over. Only 2 runs considered. Again, a beautiful piece of delivery. Loud of a bill, but no outside edge from the bat. Classical bowling from Ravi. Two runs and 3 dots we have seen in this crucial over of power play. So this ball, all eyes on this ball because the batter will try to go for that big shot, try to go for that maximum and boundary. As the last ball of power play this is. On the other side, there is always a chance for the bowler, but played with the soft hands.
Don't want to take that risk. Excellent over from Ravi. Comes to an end. That's a decent total. 6 gone, it's 32 for 2 we have got. 124 more required from 24 to 84 balls. Who is going to win? That's the biggest question. We need to wait 14 more overs for that. But the game is on. Both the teams working hard. Batters will try to settle down. They're trying to settle down there, trying to find the rhythm, trying to time the ball. On the other side, the bowlers, they're still looking for the wickets, more wickets. And they also know that if they're able to get that more wickets in that 10 overs of game, then the rest of the game will be easy for them. IIT Jodhpur, they're batting on. They're chasing the total of 155, 156 to win. And it's a beautiful power play for the bowling unit. IIT ROPAR. Chinmay, the new bowler, and miss again. Nikhil is just trying to drive the ball. He's missing his line and length. Couldn't pick that. And Sudhanshu is just telling him that place the ball with the soft hands, go for the singles and doubles, give the strike. Again, a good ball. Settle down with a dot. The more you dot, the more you play the dots, the better the chances for the team, the opponent team, because you are creating a pressure on yourself by playing that dots. Somehow the single has been taken that couldn't get that good connection with the bat, but they would be happy as they're coming down for the second as well, I believe. Yes, the 2 runs has been taken. And that should be the approach, because you need to convert that opportunity when you are able to get that second also, converting ones into twos. And you will have that time, you will have that gaps as the field is wide open now. You can easily place the ball into the gap and you can go for the singles and doubles. On the other side, Sudhanshu is set, so he can go for the big shot and he can connect the ball well. We have seen that connection on the very first ball. He's able to get that maximum. So these middle overs will decide who's going to win, because if they not lose the wickets, the game is on. But if they started losing wickets, then it would be difficult for the batting unit to be back in the game. 120 required from 79. So difference is increasing between the runs required and the balls. Dot to end at over 7 gone. It's 36 for 2.
The new bowler coming in. That's a good ball. That angle always creates the chances, especially left-handed bowlers. They will always try to get that angle, try to pitch in the ball and turn the ball from the out of stump area. That's a good connection, and we'll be getting that couple of runs. अभी तक फंसा हुआ है मुकाबला। यहाँ से अब देखना होगा कि कहाँ पे झुकता है ये मुकाबला, और मिडिल ओवर्स वहां पे डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा। यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट है, ये देखे जाएगा पूरे 4। थोड़ा सा आगे रखना होगा गेंद को, यहाँ से पुल करने में आसानी हो जाएगी। स्क्वेयर पे कोई फील्डर मौजूद था नहीं, मिड विकेट पे जरूर था, लेकिन जिस तरह से वो कनेक्शन हुआ था, टाइमिंग बेहतरीन था और वो रोक नहीं पाए। तेज रफ्तार के साथ बहुत बॉल चली गई बाहर, बाउंड्री के बाहर। एक बार फिर से पुल करने की कोशिश उसी दिशा में, लेकिन फील्डर को थोड़ा सा और शिफ्ट किया था इस बार, और यहाँ पे करीबी था मामला। वो थ्रो अच्छे से आया नहीं, वो फ्लैट थ्रो चाहिए था, लेकिन आया नहीं। अगर फ्लैट थ्रो आता तो फिर करीबी होता ये मामला। रन आए इस ओवर में 9 आए और एक गेंद बाकी है। सिंगल चाहते थे लेकिन मिलेगी नहीं शायद। बल अच्छी ओवर ये, 9 रन आए इस ओवर में। 45 पे 2, 8 के बाद IIT जोधपुर। रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 9.25 का है, और करंट मौजूदा जो है वो 5 के आसपास का। तो यहाँ पे रन गति बढ़ानी पड़ेगी अब। तो ये भी दिमाग में रहेगा कि कैसे वो रन आए। और पिछली ओवर वहां पे पता चल रहा था कि थोड़ा सा बाजू को खोलने का प्रयास है बल्लेबाजों का, और खोलना भी चाहिए। वो इनिशियल टाइम बिता चुके हैं आप, 16 गेंदें खेल चुके हैं सुधांशु। दूसरी पे छोर पे निखिल भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब मौका मिलेगा तो वहां पे गियर शिफ्ट करने पड़ेंगे। एक बड़ा शॉट हर एक ओवर में चाहिए। यहाँ से स्लाइस किया था बॉल को, लेकिन फील्डर मौजूद है, सिंगल लेना चाहते थे, नहीं ले पाए। लिया है शायद, क्रॉस कर चुके। अच्छी सिंगल होगी ये। सीधा बॉल चली गई थी पॉइंट पॉइंट के पास, फील्डर मौजूद था। बस लॉक स्वीप का प्रयास, फील्डर डीप्स, फील्डर है मौजूद। शॉर्ट स्क्वायर लेग पे इस बार कोई सिंगल मिलेगी नहीं। 70 गेंदे है, 110 चाहिए, 46 पे 2 स्कोर। इंटरेस्टिंग होगा ये बैटल यहाँ से। ये अच्छा कनेक्शन है, लेकिन कितनी दूरी ये देखना पड़ेगा। सीधा हाथों में मार बैठे चिन्मय के नाम ये सफलता। इसी के बारे में बात कर रहे थे हम। थोड़ा सा दबाव महसूस होता होगा, जिस तरह से वो रन रोक लगाई हुई थी रन के ऊपर। वो बड़े शॉट के प्रयास में अपनी विकेट खो बैठे।
और इसी की जरूरत थी यहाँ पे आईआईटी रोपार को। चिन्मय ने वो सफलता दिलाई है। रन गति के ऊपर यहाँ से और रोक लगेगी। विकेट जब भी आता है, अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही थी, अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी, दोनों अच्छे खेल रहे थे, एक दूसरे को समझते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इसमें श्रेय देना पड़ेगा बॉलर्स को, जिस तरह से वो पकड़ के रखा था पावर प्ले में। पिछले ओवर में जरूर एक बाउंड्री आई, 9 रन आए, लेकिन उसके अलावा अगर आप बाकी के ओवर्स देखोगे तो बिल्कुल जम बनाए हुए आईआईटी रोपार के गेंदबाज, और कहीं ना कहीं वही वो सफलता दे रहे। सभी बॉलर्स आके दबाव डालने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा डॉट्स खिलवाने की कोशिश। तो बड़ा शॉट वो दिमाग में चलने लगता है कैलकुलेशन एक समय के बाद। जब आप ज्यादा समय बिता चुके हो, 15-16 गेंद खेल चुके हो, तो आपके दिमाग में वो चलने लगता है कि क्या मैं ठीक खेल रहा हूँ या फिर मुझे थोड़ी सी रनगति बढ़ानी पड़ेगी। ये सब जब कैलकुलेशन होने लगता है तो कंफ्यूजन आता है, और कंफ्यूजन जब होता है तो फिर वो गलती कर बैठते हो बहुत बहुत बार आप। सोच में कोई खराबी थी नहीं, बड़े शॉट के लिए जाना ही चाहिए था, लेकिन वो गलत बॉल को चुना। कनेक्शन उतना खास हो नहीं पाया, उस वजह से वो सफलता हासिल की है चिन्मय ने। अखिलेश, न्यू बैटर कमिंग इन, and this is the line they are targeting more on, changing the length a bit, keeping it fuller, keeping it 5 to 6 meters, sometimes keeping it back off length, but that area, that line is outside the off stump. One more time, the same thing. That is giving them the results. So the patch has been created in that area, hitting that area again and again. Just like throwing arrows at the right moment, at the right location. Each and every time they are just hitting that area. And it's not that easy to slice the ball. It's not that easy to place the ball in the covers when you are new to the crease, especially against left-hand bowlers, left-hand spinners, because they have got a decent angle. They are able to create that decent angle, especially against the right-handed batters. Setup. We'll have that 11 overs from here on. Ravi is going to continue. It's a bit of expensive in the first over. The required run rate is increasing. He's stepping up the ladders. Something needs to be done. Sudhanshu, all eyes on this man because he's settled out there. Will try to bring that runs on the board for the team. It's a classical placement. But for that shot, the fielder is right there at the tip. That's something you want to see more. If you are a fan, if you are supporting IIT Jodhpur, you need that misfields. Converting that twos into threes. Each and every run matters from here on. If you're able to get that big shot in each over and then you focus more on singles and doubles, then it's still possible. Required 100 is in. It's almost double. Are playing at 5. That's what the plan will be, to get that big shot in each and every over, to get that boundary. And then the rest of the deliveries, you can focus on the singles and doubles. Akhilesh will get off the mark with that single. And all eyes on Sudhanshu, because if he's able to stick in there at the last moment, the game is on. 50 comes upon the board for IIT Jodhpur with that single. Still a decent score. It's just that they have lost a couple of wickets. Good shot that. Able to stop the ball there. And
just a fumble in that. They're able to get that second as well. So good presence of mind by the batters. They're closely watching the ball. They saw that the ball jumped off and grabbed another run. Good capitalization, good use of the opportunity to convert that ones into twos. अच्छा शॉट है ये, लेकिन फील्डर मौजूद है। ये अच्छी बात लगी कप्तान की मुझे। देखा उन्होंने कि थोड़ा सा बैक ऑफ लेन जब आ रही है गेंद लेफ्ट हैंडेड स्पिनर्स की तरफ, तो फिर वो बार बार लगातार उस स्क्वायर लेग की दिशा में मार रहे 4 रन। थोड़ा सा फाइन रखा है अब और शिफ्ट किया स्क्वायर लेग के फील्डर को। पहले वो मिड विकेट पे था, उसके बाद में शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर फील्डर तैनात किया और स्क्वायर लेग के थोड़ा सा बाजू में रखा है फील्डर को। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में फील्डर को तैनात किया है। उस वजह से रन के ऊपर रोक लगी हुई है अच्छे खासे। 10 के बाद 53 पे 3 IIT जोधपुर। उसके बाद 53 स्कोर है। यहाँ से थोड़ा सा कैपिटलाइजेशन करने के बारे में सोचेंगे दो बैटर्स, खासकर सुधांशु, और अच्छी प्लेसमेंट कर रहे हैं। सिंगल्स को डबल्स में कन्वर्ट करके वो रन्स आ रहे बोर्ड पे। 101 चाहिए 59 गेंदों में। 40 का डिफरेंस है लगभग बॉल्स और रिक्वायर्ड रन्स के बीच, तो उसको थोड़ा सा कम करना चाहेंगे अब आने वाले ओवर्स में। कट करने की कोशिश, लेकिन अच्छे से कनेक्शन हो नहीं पाया है। यहाँ पे थोड़ी सी मिसफील्ड, रन्स मिलेंगे, अतिरिक्त रन्स मिलेंगे और ये पूरे 4 देके जाएंगे। ये रोक लेना चाहिए था। थोड़ी सी मिसफील्ड, हल्की सी मिसफील्ड वहां पे, जज नहीं कर पाए। थोड़ा सा और झुकना पड़ सकता था वहां पे।
लेकिन वो जो बाउंड्री चाहिए थी वो आ चुकी है, उस वजह से थोड़े से मोमेंटम मिल जाएगी, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस भी मिल जाएगा। बाउंड्री के ऊपर रोक लगाई थी अच्छे खासे और इस मिसफील्ड के चलते हुए वो बाउंड्री मिली है। इस बार डाउन द ग्राउंड, लेकिन सीधा हाथों में, पूरी तरह से फुलर रखा था इस गेंद को, मारना चाहते थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। एक और बड़ी सफलता चिन्मय खेनाम। अब थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया है मुकाबला, दबाव पूरी तरह से आया थी जोधपुर पे, क्योंकि अच्छी बैटिंग कर रहे थे सुधांशु। उनको अब चलता किया है, पैवेलियन की ओर भेजा है और चिन्मय लेफ्ट आर्म स्पिनर का जादू चलता हुआ दूसरी विकेट अपने टीम के लिए दी है। 11 रन खर्च किए अब तक, लेकिन 2 बड़े झटके दिए आईआईटी जोधपुर को। आईआईटी रोपार को अब थोड़ा सा राहत की सांस, पूरी तरह से फंसा लिया है। 59 पे 4 स्कोर है, यहाँ से रन भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये विकेट आ रहा है वो दबाव साफ महसूस करेंगे बैटर्स। चंद्रपाल सिंह नए बल्लेबाज, ड्राइव किया था बॉल को, सिंगल चाहते थे लेकिन मिलेगा नहीं। और यहाँ से अब रोमांचक होगा मुकाबला, क्योंकि एक तरफ से रन्स चाहिए, वो बड़े शॉट्स भी चाहिए, लेकिन वो विकेट जा रहे हैं। चंद्रपाल सिंह जिन्होंने काफी अच्छा प्रभावित किया था गेंद से, गेंदबाजी से, लेकिन अब वही करने का प्रयास रहेगा, बैट के साथ भी वही करना पड़ेगा। काफी फुलर इस बार भी आने दिया अंतिम समय तक, और फिर वो सिंगल आसानी से मिल जाएगा, दूसरा भी चाहेंगे और वो भी मिल जाएगा। ये देखा है हमने, बॉल को प्लेस कर रहे, बहुत दूर भेज रहे बॉल को, अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड है ये, तो 2 आसानी से प्राप्त कर रहे बार-बार लगातार, चाहे कौन-सा भी बल्लेबाज हो। तो ये अच्छी बात है कि स्ट्राइक रोटेशन हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ अब वो बाउंड्री भी चाहिए होगा, वो बड़ा शॉट भी हर एक ओवर में चाहिए होगा। ये देखिए, कमाल की गेंद थी, पड़ के अंदर की तरफ और फिर हल्का सा टर्न। कमाल की गेंदबाजी चिन्मय की, तीसरी ओवर उनकी समाप्त। 59 पे 4 है स्कोर आईआईटी जोधपुर का। आदित्य मीना नए गेंदबाज, 53 गेंदों में 90 के ऊपर रन चाहिए। अब राइट हैंड स्पिनर के साथ गए हैं, विद द स्पिन खेलने की कोशिश की थी, अच्छा कनेक्शन भी हुआ, लेकिन वो बड़ा शॉट कौन मारेगा, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक को रिस्क लेनी पड़ेगी, और साथ ही साथ वो भी दिमाग में रहेगा कि विकेट ना गवाए। पूरी तरह से शिकंजा कसा है स्पिनर्स ने आईआईटी रोपार के। ये वाइड होगा, फिर से डालनी पड़ेगी गेंद, लेकिन जो विकेट चाहिए थे इनिशियल ओवर्स में वो दे के दिए अपनी टीम को, उस वजह से वो 150 के ऊपर का टोटल बहुत बड़ा लग रहा है। काफी लेट खेला था इस बार, स्टंप के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर चंद्रपाल सिंह के खिलाफ। यू मिस आई हिट, ये दिमाग में रहेगा।
बॉल को काफी लेट खेल रहे चंद्रपाल सिंह। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स ये। आ गए थे वापस क्रीज में। 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा इस बार, क्योंकि बॉल तेज रफ्तार के साथ जा रही थी फील्डर के पास, तो मौका था नहीं दूसरे रन का। बड़े शॉट का प्रयास इसी के बारे में बात कर रहा था। यू मिस आई हिट, वो दिमाग में जरूर था, उस वजह से कहीं ना कहीं स्टंपों के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे। इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल पड़ के थोड़ी सी अंदर की तरफ और मिस कर गए पूरी तरह से। पहले खेल गए थोड़ा सा और ये 5वीं विकेट का पतन। कमाल की गेंदबाजी, हर एक बॉलर के नाम वो विकेट है। आदित्य मीना की ये पहली ओवर बहुत ही बड़ी थी। शिकंजा पूरी तरह से खसा है। 64 पे 5 12 के बाद। एक और गेंद बची है, शायद इस ओवर की देखना पड़ेगा, लेकिन कमाल की गेंदबाजी। वो जो विकेट चाहिए था वो देके दिया है टीम को, और यही खासियत रही है इस टीम की, आईआईटी रोपार की। वो विकेट बार बार ले रहे, तो उस वजह से वो पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रही है, और पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो रही है, उस वजह से कहीं ना कहीं वो दबाव महसूस कर रहे हैं। और हर एक ओवर में बड़े शॉट भी जरूरत है, उसको भी पता है। तो वो गए थे बड़े शॉट के लिए, बल्ला जोर से घुमाया था, लेकिन वो टाइमिंग हो नहीं पाया अच्छे से, उसका ही फायदा उठाया। अच्छी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 12 के बाद 64 पे 5 आईआईटी जोधपुर। ड्राइव किया है इस बार भी, थोड़ी सी मिसफील्ड और वो सिंगल हासिल करेंगे। But the credit has to be go to the bowlers, the way they bowled, constantly forcing the batters to go for the risky shots, as they're sticking it to the basics. That outside the off stump area has been effective for the bowlers of IIT Ropar. Again, that area, the strike rate, the run rate has to be increased now. Required run rate is close to 12. वो काफी लेट खेला था इस बार, ऑलमोस्ट फंसा लिया था, और क्विकर वन था ये। बॉल पड़ के स्किड होके और तेज निकल गई, लेकिन बैट सही समय पे लेने में कामयाब, उस वजह से अभी भी है क्रीज पे चंद्रपाल सिंह। कदमों का इस्तेमाल डाउन द ग्राउंड, लेकिन फील्डर के पास। वो मिड विकेट पे काफी अच्छी फील्डिंग सजाई है। मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, स्क्वेयर लेग, तो जहां पे स्कोरिंग रन है, स्कोरिंग एरिया है, तो वहां पे अच्छी खासी फील्ड प्लेसमेंट है। इस बार काफी दो जोर से खेला था वो शॉट, लेकिन रन आएंगे नहीं, नाखुश दिखे थोड़े से। जानते थे कि वो स्लॉट में है और फील्डर मौजूद है नहीं शायद, तो उस वजह से वो बाउंड्री के ऊपर रोक लगाई है अच्छे से। इस बार थोड़ा सा और फाइन खेला,
गैप में खेला और उस जगह पे भी फील्डर है, तो कमाल की गेंदबाजी और कमाल की फील्ड प्लेसमेंट दोनों का मिश्रण, और उस वजह से वो बाउंड्रीज पे रोक लगाई अच्छे खासे। 13 ओवर की समाप्ति 69 पे 5। स्वीप करने की कोशिश, और ये उंगली उठी है, बहुत ही बड़ा झटका ये पहले ही गेंद पे, वो बड़ी सफलता। Just trying to get towards the line of the ball there. He has to walk back to the pavilion. Chinmay and Aditya, these are the two game changer bowlers here. That's a good decision by the umpire. The ball was heading to the pad and it's plumb in front. This is the 6th wicket for IIT Jodhpur. Aditya Meena has got 2nd wicket on his name, 3 runs conceded, and a dream day for them. IIT ROPAR, 87 required from 41 balls. More worries for IIT Jodhpur. Can someone come back in the game? Can someone shift the momentum? That's what we need to see now, because the bowlers have done a great job. They're putting a lot of pressure, getting the wickets for the team in each and every over. The plan is simple, to get the wicket, and they're getting it easily. That's why IIT Jodhpur not able to find that rhythm, find that momentum. They're playing some balls, and there was a close call there. There was a close call. Appealing for that run out, but the umpire is not interested. But each and every ball is disastrous for IIT Jodhpur from here on. Something is happening on each and every ball, so need to take care of that wicket. Try not to lose the wickets. This time single has been taken. You need that couple of shots like this. You need that placement. You need that singles and doubles. He was trying to play the ball towards the covers, but thick edge, he got late to react, and that's why the ball went out on the onside. He's safe. The single has been taken in that time. Run rate, just have a look at that. It's more than 13 now, and I think they're gonna face a lot of difficulties from here on to go for the big shots, as they have lost a couple of wickets. They're already 6 wicket down. Wanted to place the ball towards mid-wicket area, and again, yes, it's a wicket. No, he dropped it. He puts that down. There was a chance. There was absolutely a chance. Ball went straight up in the air. Couldn't judge the ball there. The sun is shining. Maybe because of that, he's not able to pick that. The chance has been created again. We'll surely get a boundary. That was a drop catch.
Aditya Bharadwaj, the new bowler coming in. Last 6 overs and more than 80 runs required. Loud of appeal, but that impact and the pitching, that was the issue. Wanted to grab a single, and the quick single has been stolen. It's taken. They would be happy to give that singles and doubles, because if you see that required run rate, it's close to 14. So they need that big shots in each and every over. Not a single, but I think they need 2 to 3 big shots in each and every over. 2 boundaries at least they need to create in each and every over. So the scenario is getting tough for them. But there is nothing impossible in the game of cricket. So the hope is still high. If these two batters can build a partnership, then it's still possible. But at the moment, bowlers are taking full control. They are looking in their zone, and why not? They've got 6 wickets, so the confidence is going to be high for the bowlers. Good ball, good ball to end that over. It's 15 gone, 78 for 6. Went for the big shot. The ball is up in the air. Oh, clean as crystal. कमाल का ये कनेक्शन था, दूरी भी उतनी, और ये देखे जाएगा पूरे 6। कमाल का ये शॉट था, और ये ऐसे शॉट्स चाहिए अब, ऐसे ही बड़े शॉट्स हर एक ओवर में चाहिए। 29 गेंद बाकी है, 72 रनों की जरूरत है। तो हर एक ओवर में अगर ये बड़ा शॉट आता है तो कहानी में आ सकता है ट्विस्ट। बिल्कुल रन्स देखे जाएगा, अतिरिक्त रन्स। कहीं ना कहीं ये फंसा हुआ है मुकाबला। 72 रन चाहिए 29 गेंदों में। कदमों का इस्तेमाल फिर से, जोर से बल्ला घुमाया जरूर था, लेकिन बाउंड्री पे फील्डर तैनात, 2 रन आसानी से प्राप्त करेंगे। बाजों को खोलने की कोशिश है यहाँ पे, और खोलना भी चाहिए अब। 28 गेंदे, 70 रन के आसपास का टोटल है। ये हवा में है, ये मौका बन सकता है, आसान सा कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। अंकित का सफर यहीं पे खत्म। एक और बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे यार, हर एक बॉल पे अब जाना पड़ेगा वो बड़े शॉट के लिए। ये 7वें विकेट, और कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो दबाव डाला है, शिकंजा कसा है आईआईटी रोपार ने। कमाल की गेंदबाजी, अद्भुत प्रदर्शन।
आदित्य मीना के नाम ये तीसरी विकेट होगी। जो मिडल ओवर्स होते, इसी के बारे में बात किए थे जब 10 ओवर्स हुए थे, उसके बाद में हम वही बात कर रहे थे कि वो मिडल ओवर्स को खेल के निकालना पड़ेगा। वो मिडल ओवर्स में अगर वो खेल जाते हो आप अच्छे से तो फिर मुकाबला जीतते हो, नहीं तो फिर वो दिक्कत हो जाती है आपको। ये भी कमाल की गेंद थी, हल्के हाथों से खेला लेकिन ना बचे बाल बाल। टर्न देखिए, कमाल की टर्न। बॉल पड़ के अंदर की तरफ 180 डिग्रीज घूमी है शायद वो गेंद, चेक करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी ओवर है आदित्य मीना की, विकेट भी आई और रनों के ऊपर भी रोक लगाई है। 8 रन आए इस ओवर से, 3 विकेट मीना के नाम। 86 पे 716 के बाद आईआईटी जोधपुर। चौबीस गेंदे 70 रन, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा होप जाता हुआ आईआईटी जोधपुर का। नए बल्लेबाज सीधा स्ट्राइक पे। 8 गेंदे खेल चुके हैं, 3 रन पे बैटिंग कर रहे हैं, तो मुश्किल होगा और वो रन याद आएंगे सिंगल हैंडेडली बनाए थे पहले इनिंग में। ये भी बड़ा गया है, बड़ा शॉट का प्रयास, नो मैंस लैंड, कोई मौजूद था नहीं, बिल्कुल बीचों बीच गिरी है वो गेंद। थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी दिखा, बॉलर भी खुद जा सकते थे उस कैच के लिए, लेकिन कॉल किसका था, कौन नजदीक था, ये सब देखना पड़ेगा। That's a close call again, but the umpire is not interested. Now you are gonna see that close calls in each and every ball because it's already 7 wickets down. So you cannot expect from the tailenders to go for the big shots. So each and every ball brings you the opportunity to get a wicket, and it's the required run rate getting closer to 20 now. So each and every over demands 20 runs if IIT Jodhpur want to win the game. That's very tough. I think the only formalities left in this game. 19 बॉल 67 रनों की जरूरत। पीछे जाके खड़े थे, इस बार भी हवा में खेला है, दूरी कितनी है चेक करना पड़ेगा। नहीं, ये एक और ड्रॉप है। 8वीं विकेट का पतन हो सकता था, काफी ऊंची गई थी गेंद, पिक नहीं कर पाए, थोड़ा सा जज नहीं कर पाए, बॉल की तरफ जा चुके थे लेकिन वो अंतिम समय पे छिटक गई गेंद। 17 के बाद 91 पे 7। Tadmoy, he's back into the attack. He's got a wicket on his name, and he's able to score that decent total on the board at the last moment. He's able to get that important runs for the team. So that's why we always tell that each and every run counts.
You absolutely don't know what is going to happen in the second innings, so better you put the runs on the board. Even it's single and doubles, you can focus on that. Just try to bring that runs for the team, and that's what they have done in the first innings. "16 balls, 64 required." Just all the formalities. IIT ROPAR, they are getting closer to the victory. That's up in the air again. We'll have to see the connection. No, straight away into the hands. Now, this time he's not going to repeat the same mistake. That slow one, he's not able to pick that. Ball went straight up in the air, and the fielder is right there at the mid-wicket area. That's the 8th wicket. Finally, plenty of chances has been given in the last couple of overs, that drop catches, but finally, Tanmoy, he's able to get that wicket on his name. Good catch at the boundary line. Current run rate 5.26. That's up in the air again, but it's in the no man land. Nobody's able to get towards the line of the ball. And that's a cracking throw. Stumps has been dismissed, but he's well inside the crease. He's gonna get a boundary on that occasion. But it's all over. That's up in the air again, and it's just away from the fielder. Ball races away towards the boundary, and he's gonna get a boundary for sure. Required run rate is at its peak. 13 balls, 58 required. Last 2 overs remaining in this game. IIT ROPAR, they're just 2 wickets away from getting a victory, so let's see. Couldn't find the spot of the bat. The ball stayed low. He was expecting a bounce, but that couldn't happen. That's why he misses line. Couldn't find the connection. He's brilliant with the ball and the bat too. He's got multiple wickets when he's bowling, and he's able to contribute the runs when it mattered the most. And because of Tanmay, they're able to get over 150. Otherwise, the things would have been different. Yes, one guy played well. He has got 68 from 28, but apart from that, they have started losing wickets. They have lost a couple of wickets in the first innings, and then Tanmay came. He has given a time, and then time rewarded him.
He's got some good runs, got some good shots, able to contribute. No, couldn't find the sweet spot of the bat. It came from the bottom part of the bat. Anshu. Swing and a Ball miss. again. 11 balls. Last 11 balls required. Runs Ball are ठीक है ball. 58. It's all over. Just need to see when it's gonna get over because that's only formalities left in this game. All credit has to be go to the bowlers of IIT ROPAR. An incredible performance by the bowlers in the initial overs. They're able to get that important wickets and then they never look back. बिल्कुल के 100 रन बनते हुए. 100 comes up on the board, that's for sure. But it's still long way to go. Smash the ball hard. And they have to settle down with a single. Coming back for the second. Good running between the wickets. सिर्फ 2 रन मिलेंगे. Both the balls, they're able to get that 2 on the board. 9 balls, 54 runs required. And that's the margin that has been created by Tanmoy. He's able to get that 30s, 40s. Just imagine if he's not able to play in that, then things would happen different totally. और ये छक्का. तालियां बजती रहनी In चाहिए. between a good shot by Siddharth. Focused on the timing. Connection was super, pure connection. And the magic happened. 48 to win in 8 balls. One more shot. This time couldn't find the sweet spot of the bat. Only a single he's gonna get. फील्डर मौजूद था. काफी अच्छी कोशिश. And that's an end of the over. Now 6 balls and 48 runs required. That's the scenario we have. We were discussing about the margin. One guy came and added that 30-40 important runs when the team were losing the wickets. So he sticked in there, Tanmoy, and added that important runs for the team, and that is the margin we are having in this game. Because if he is not able to score, then the scenario will be around 6 balls and 18 runs. That's the scenario we were witnessing here. Gone. Dismissed the stumps inside edge and then deflection right on the middle of the stumps. Getting closer to the victory now. Tanmay, he is able to get that wicket again. 3 important wickets on his name. He just came in and got a wicket on the very first ball. 109 for 9. Balls left. Need 47 runs.
Tried to play with the soft hands and got a success in that. Last 4 balls remaining. IIT ROPAR having a fantastic performance in this today's game, and they are very close from getting a victory. He's gonna play the balls. He's gonna play that 20 overs fully. That's the plan. Again, played with the soft hands, and he's able to succeed in that. Able to defend, just trying to play that 20 overs full, and that is the last ball that is coming in. Played with the soft hands, and that's it. IIT ROPAR, they're able to get that victory in today's game. All thanks to Tanmoy and one more man. Was the hitting machine. 68 is scored from 38. And because of these two batters, they are able to get that 155 on board. IIT ROPAR won by 46 runs. A good game we have witnessed and many more to go. So don't forget to tune in live. Watch these exciting games. We have seen that exciting game in yesterday also. And now that is the story. Rahul Bhuria, that was the man. It was a game changer, 68 from 28. And then Tanmoy, he has got that 33 important runs. Vivek also 14 from 28. And that small runs but impactful innings that really create a difference. In the end, IIT Ropar won by 46 runs. That's the story. We'll see you in some other, but that's it from the commentary box as of now.
बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा हमारा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दंग सुनो देखने को करे इंतजार ये मैदान एक एक पसीने के बूंद बूंद से सींचा है ये मैदान सुनो देखने को करे इंतजार ये मैदान एक एक पसीने के बूंद बूंद से सींचा है ये मैदान सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया सारी तेरी पैरों की ताकत सारी उन दिनों की मेहनत देखने को बेचैन है ये दुनिया हराने का मकसद नहीं है जीतने का इरादा आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दंग आए हैं तो जीतेंगे हम ना हो किस्मत का करम हर एक लम्हे में दम कर दे यहाँ हर किसी को दंग
एक कदम देंगे इस मैदान को इंसाफ, हार कभी होगा हमारा खास। सबके जुबां पे बस एक ही नाम हो तो हो बस हमारा, हमारा। आए हैं तो जीतेंगे हम, ना हो किस्मत का करम,